वेलकम टू स्पार्क क्लास बालेश्वर। पिला माने आम प्रीवियस वीडियो रे डिस्कस करूथलु अबाउट द रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। तो आम पाखरे यही आसला रिलेशन कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इक्वल टू मोलालिटी बाय मोलालिटी प्लस 1000 बाय m2। इन केस ऑफ वाटर जदि वाटर होची सॉल्वेंट फॉर्मेट थाए सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वुड बिकम मोलालिटी बाय मोलालिटी प्लस 55.55। तो ए रिलेशन को बेस करके आम गोटे एग्जांपल करबा। कम टू फर्स्ट एग्जांपल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ mole fraction of a solute in 1 molal aqueous solution। 1 molal aqueous solution। Calculate the value of mole fraction of a solute in 1 molal aqueous solution। Dear students, aqueous solution means solvent is water, so how can you calculate mole fraction of a solute equal to molality by molality plus 55.55। in your question the value of molality is given as 1, so 1 by 1 plus 55.55, so 1 by 56.55। after calculating you will get value 0.017, you will get value 0.017। okay, then come to second example। calculate the value of molality if mole fraction of a solute in benzene solvent is 0.4। calculate the value of molality if mole fraction of a solute in benzene solvent is 0.4। dear student, here is the solvent is benzene non-aqueous medium, so that you can use the expression mole fraction of a solute equal to m by m plus 1000 by m2। in case of benzene the value of m2 is 78 because the formula of benzene is C6H6। the very simple, so 0.4 equal to molality by molality plus 1000 by 78, 1000 by 78। so dear student, 0.4 can I write 0.4 means fractionally 2 by 5, so 2 by 5 equal to m by m plus 1000 by 78। that is you will get value probably you will get 12.8, yes, 12.82। okay, so 2 by 5 equal to, this implies that can I write 5 by 2 equal to m plus 12.82 divided by m, so you will get 1 plus 12.82 by m, so 5 by 2 equal to 1 plus 12.82 by m। can I write 5 by 2 minus 1, you will get 3 by 2 equal to 12.82 by m, so now this implies that finally you will get m equal to 2 into 12.82 by 3। yes, so you will get the value
25.64 by 3, so 25.64 by 3, by 3, you will get value 8.547, 8.547, that is mole per kg unit, mole per kg, because you will calculate the value of molarity, you know that molarity has unit mole per kg. Okay, so then come to next concentration part, that is molarity, then come to next concentration part, that is molarity, RITY, and symbolized as capital M. Molarity. What is molarity? Molarity may be defined as number of moles of a solute is present in 1 liter volume of a solution. Molarity may be defined as number of moles of a solute, is present in 1 liter volume of a solution, 1 liter volume of a solution, 1 liter volume of solution. Dear student, remember that 1 liter you can say 1 decimeter cube, or you can say 10 to the power minus 3 meter cube, or you can say 1000 ml, or you can say 1000 centimeter cube, or you can say 1000 cc, cubic centimeter. So that is the normal conversion of volume. 1 liter equals with 1 decimeter cube, or you can say 10 to the power minus 3 meter cube, or you can say 1000 ml, or you can say 1000 centimeter cube. Moreover, let V liter solution contains n moles solute, n moles of a solute. V liter solution contains n moles of a solute. Then 1 liter solution contains n by B moles of a solute. N by B moles of a solute. By definition of molarity, molarity can be expressed as N by B unit mole per liter, or you can write also mole per decimeter cube, mole per liter, or you can write mole per decimeter cube. So molarity equal to N by B. If V is given in ml, milliliter, then what happens on expression of molarity? Molarity can be expressed as N by V by 1000. Yes or no? So finally you will get N into 1000 by V. So now molarity can be expressed as N into 1000 by V unit mole per liter. So if volume is given in ml, but our intention to keep the unit of a volume as liter, so that divide 1000. So mathematically now that 1000 appears in numerator position. So molarity equal to N into 1000 by V. Dear students, you know that number of moles you can express as, you can convert given mass by molar mass. So now molarity can be expressed as W1 by M1
into 1000 by V unit mole per liter. Just number of mole can be expressed as given mass of a solute with respect to molar mass of solute. You can also write number of moles equal to number of molecules or number of particles divided Avogadro's number 1000 by V unit mole per liter. You can also write number of particles divided by Avogadro's number into 1000 V. Number of moles may be expressed as given mass by molar mass of solute. Number of moles can also be expressed as number of particles divided by Avogadro's number. From your basic chemistry, number of moles can be calculated by using only three procedure, means given mass by molar mass, or number of particles by Avogadro's number, or given volume divided by 22.4 liter. But third expression only used for gas, but our discussion only liquid solution, so that third procedure is not valid here. Okay, आमे जेतु लिक्विड सॉल्यूशन पर आमर डिस्कशन रोसी, आमे थर्ड मेथड को यूज करि परिबा नाही. थर्ड मेथड टा होची गैसियस केस रे. तेणु आमे दीटा कथा एठी लिखि परिबा कि गिवन मास बाय मोलर मास और नंबर पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर. ये होची मोलारिटी रो सिंपल एक्सप्रेशन. फर्स्ट कम टू एग्जांपल नंबर 1. सपोज 3.65 ग्राम HCl is present in 100 ml volume of a solution. 100 ml volume of a solution. 3.65 gram HCl is present in 100 ml volume of a solution. Then calculate the value of molarity. Then calculate the value of molarity. Then calculate value of molarity. ताले molarity value को हम calculate करिबा. Okay. So for calculation of molarity, you have to need only three data: given mass of a solute, molar mass of a solute, volume of a solution. In your question, all the items are given here. Means W1 given 3.65 gram. 3.65 gram molar mass of a solute you can calculate from formula, means 1 gram plus 35.5 gram. So you will get 36.5 gram, and volume is given here 100 into 1000 by V, and unit is mole per liter. So now W1 is given 3.65 gram. You can write 365 into 10 to the power minus 2 gram for your easy calculation. M1 36.5, you can write 365 into 10 to the power minus 1 gram into 1000 by 100. So by calculating you will get the value. So that is 10 to the power minus 1, and that is 10. So finally you will get 1 mole per liter. That means the molarity, molarity of solution is this unimolar. जेहेतु एम वैल्यू तुम्हें 1 पाइल तो आंसर कौन हो यूनिमोलार. ऑप्शन थे यूनिमोलार हम ना सेमीमोलार हम ना डेसिमोलार हम. सो आंसर इज दिस यूनिमोलार बिकॉज द वैल्यू ऑफ मोलारिटी इज दिस 1. Then come to second question. Second question means suppose 0.4 gram sodium hydroxide is present in 125 ml volume of a solution. Definition wise question: calculate the value of molarity. Calculate बेले बेले क्वेश्चन कौन दिए छुआ मोलारिटी वर्ड यूज कर
मोलारिटी वर्ड जदि यूज न करथिबो लिखि दे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, इन मोल पर लीटर। अरे भाई दैट इज द मोलारिटी। बेले बेले क्वेश्चन कौन करे तुमको मोलारिटी वर्ड यूज करने थी लिख दो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन और कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर कार यूनिट मोलारिटी तामने से तुम डायरेक्ट यूज कर कौन बाहर करने मोलारिटी। अच्छा ओके एठी भी तुमको सब डाटा डायरेक्टली दिखाई W1 इज इक्वल टू 0.4 ग्राम and M1 is here, here is sodium hydroxide 40 gram, very simple, and the volume is given 125 ml. Dear students, here is also volume is given in ml. So if volume is given in ml, so now calculate molarity equal to W1 by M1 into 1000 by V. Yes, so that is 4 into 10 to the power minus 1 gram, that is 4 into 10 for your easy calculation, and that is 1000 by 125 and that is mole per liter. No doubt dear student, that is 8 gram cancel here, 4 cancel here, so that is 10 to the power minus 2. So now you will get 8 into 10 to the power minus 2 or 0.08, that is mole per liter. 0.08 mole per liter. 0.08 mole per liter. Okay. पिलाने बर्तमान आम आउ एक न्यूमेरिकल जब टिके भिन्न टाइप आंसर क्वेश्चन हमको मागी थो केमती कि राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड is dissolved in suppose 100 ml volume of a solution. 4.9 gram sulfuric acid is dissolved in 100 ml volume of a solution. My question, calculate the concentration of H plus ions in solution. तो से सॉल्यूशन यार कंसंट्रेशन बार करो है कि पिला माने वॉल्यूम ml अच्छी माने मोल पर लीटर आसो ता माने मोलारिटी ता माने हमको कौन बार करता कही मोलारिटी देखो पिला क्वेश्चन चेंज कला क्वेश्चन कला कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड is dissolved in 100 ml volume of a solution, then calculate the concentration of H plus ion in solution. आशा पिला माने आमे डायरेक्ट आयन रे कंसंट्रेशन कैलकुलेट करि परिबा नै सो दैट आगे हम चेक करिबा व्हाट इज द कंसंट्रेशन व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन आगे सॉल्यूशन लो मोलारिटी हमें बाहर करबा हलाई ओके ताले आमे आगे नॉर्मल कथा बाहर कर दबा जे W1 हमको देछि 4.9 ग्राम यस and M1 for sulfuric acid no doubt that is 90 gram. Yes, because the solute is H2SO4 and volume is given here 100 ml. So finally first calculate the molarity for what? H2SO4 solution. Dear students, molarity for H2SO4 solution equal to W1 by M1 into 1000 by V. W1 by M1 into 1000 by V. So W1 is given here 49 into 10 to the power minus 1 gram, that is 90 gram, and that is 1000 by 100 mole per liter. 1000 by 100 mole per liter. Dear students, by calculating you will get value gram cancel here 49 90 equal to 2, so that is also cancel here and that is 5. So very simple, 0.5 mole per liter. 0.5 mole per liter. Yes, 0.5 mole per liter. But my question was what is the concentration of H plus ion
Dear students, in solution, sulfuric acid electrolyte will be dissociated into 2H plus ion plus SO4 2 minus ion in solution. पिला माने सॉल्यूशन रे सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेट केमती थिबो 2H plus ion मने पकाओ मु तुमको केबे गोटे प्रीवियस क्लास रे कहितली इफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सप्रेस्ड एज XBY it converted into ions like this X into AY plus Y into BX minus X into AY plus Y into BX minus. So dear students, here is that is A, that is X, that is B एवं Y कते 1 by convert कले 2H plus SO4 2 minus. If the molarity value H2SO4 0.5, no doubt the H plus ion molarity kete is about 2 into 0.5, that is 1, and that is 1 into 0.5 equal to 0.5. तो हमको जो क्वेश्चन देता व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H plus ion हम आंसर केते हिजबो 1 मोल पर लीटर 1 मोल पर लीटर. अच्छा पिला माने बढ़िया कथा एटी गोटे लुचिक अछि कौन मोलारिटी फॉर आयन इज कॉल्ड फॉर्मालिटी. इलेक्ट्रोलाइट पाई आमे कंसंट्रेशन को कहू से मोलारिटी, बट रिमेंबर दैट मोलारिटी फॉर आयन इज कॉल्ड फॉर्मालिटी. फॉर्मालिटी मीन्स वर्ड कोटा आसला देखो वेरी सिंपल. आयन रो अल्टरनेटिव ने होची जे होची फार्मूला यूनिट. आयन को कहते फार्मूला यूनिट. फार्मूला यूनिट टर्म कोन आसी गला फॉर्मालिटी. तो फॉर्मालिटी इज नथिंग एल्स. फॉर्मालिटी इज मोलारिटी व्हिच इज अप्लाइड फॉर इंडिविजुअल आयन. इंडिविजुअल आयन को कोन कहते फार्मूला यूनिट. तो पिला माने मन रख बेले बेले फॉर्मालिटी वर्ड जदि यूज करता नॉट पॉइंट हला टर्मिनेशन नॉट पॉइंट जे मोलारिटी फॉर इंडिविजुअल आयन को कौन कहते फार्मूला यूनिट. फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फॉर्मालिटी. सिंबलाइज कैपिटल F. तो हमें इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को मोलारिटी को, बट रिमेंबर दैट द मोलारिटी फॉर इंडिविजुअल आयन यू कैन से दिस टर्म फॉर्मालिटी. तो आयन रो अल्टरनेटिव टर्म होसी फार्मूला यूनिट. आयन रो अल्टरनेटिव टर्म होसी फार्मूला यूनिट. ओके सपोज क्वेश्चन 0.63 ग्राम नाइट्रिक एसिड is dissolved in 175 ml volume of a solution. Calculate the concentration of nitrate ions in solution. 0.63 gram nitric acid is dissolved in 175 ml volume of a solution. Calculate concentration of nitrate ions in solution. Very simple. First calculate the molarity of nitric acid solution. First calculate the value of molarity of nitric acid solution. Dear students, according to question, W1 is given 0.63 gram. Okay, and molar mass. So here is the solute is nitric acid. Yes, molar mass also 63 gram. Okay, and volume is given in your question 175 ml. Then calculation of molarity for nitric acid solution.
that is W1 by M1 into 1000 by V. So W1 is given 63 into 10 to the power minus 2 gram and molar mass is given 63 gram and 1000 upon 175. Dear students, gram cancel easily and 63 cancel easily. So in your numerator only 10 to the power minus 2. But now the question, so that is yes 0. Yes 0.05. Yes हाँ. So 0. So that is 4 into minus 2. So that is 4 into 10 to the power minus 2 by 7. So can I write is the 40 by 7 10 to the power minus 3. So that is so that is 0.0057. Yes or no? .0057. Yes, very simple. 10 to minus 2, that is 4 by 7. So 4 into 10 to minus 2 by 7, that is 40 into 10 to minus 3 by 7. 40 by 7 5.7 10 to minus 3. So by decimal conversion you will get 0.0057. Now nitric acid solution, in solution that is H plus ion plus NO3 minus. So coefficient value 1 तो ये वैल्यू किसी परिवर्तन हम नहीं. So if that is 0.0057, that is 1 into 0.0057, you will get 0.0057. Here is also 1 into 0.0057, you will get 0.0057. कारण ये कोएफिशिएंट रा कौन से फर्क नहीं. ओके, कैलकुलेशन ठीक आसला बोले छी 0. Okay, check this. 63 into 10 to minus 2, 63, 1000 by 175, cancel here, 10 to the power minus 2, that is अच्छा 200 over ना. 80 बोली. Okay. This 200 थिला, this 35. Yes 40 is वो. So 40 into 4 into 10 to minus 1. So that is minus 2. So that is minus 2. Yes. Okay. So 0.057. Okay. So now the value of nitrate ion concentration 0.057. So बर्तमान आमे जो मोलारिटी करते ये सब डेफिनेशन वाला उसी न्यूमेरिकल इजीली तुमको दे दी थो डाटा दे तो तुम्हें कैलकुलेट कर पारे. बट बर्तमान आमे देखिबा अनदर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन. देखो, लेट मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन एज एक्स. मन करता वैल्यू को एक्स धरा जाए, सी तार किसी भी वैल्यू देती हो 5 10 15 20 35 40 जा भी दो. एंड डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन is given as मान कर दिया इसे d gram per ml. How can you calculate the expression of molarity? बढ़िया कथा देखो किसी नहीं. Now how can you express the value of molarity? तो हमें मोलारिटी केमती कैलकुलेट करबा. डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट मास परसेंटेज इज x. दैट मीन्स x ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यस और नो?
आमको जो देछि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज x, दैट मीन्स मुझे कही पारे कि पिला जे मास ऑफ सॉल्यूट इज x ग्राम, दैट इज द W1, मास ऑफ सॉल्यूट इज x ग्राम, yes or no? And can I write volume of a solution is 100 ml, volume of a solution equal to 100 ml. आम ए डाटा एति कथा लिखि परिबा. So if mass percentage of solution is given as x, can I write mass of a solute is x gram and volume of a solution that is 100 ml. पक्का. अच्छा, let molar mass मन करा जाऊ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आमे से सॉल्यूट आम पाई अननोन अच्छी ना कहले आम पाई जाबा. मोलर मास सॉल्यूट इज मन करा जाऊ m1 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को धरा जाऊ केते m1 ग्राम. ओके, बर्तमान मते डेंसिटी दियाइसी, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन केते दियाइसी d ग्राम पर ml. पिला माने मोलारिटी को कैलकुलेट करे पय हमको रिक्वायर्ड कोन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. है कि कौन दे हमको छुआ वॉल्यूम ऑफ कौन थिला हमको पिला माने एट कौन दे सॉरी एट भूली हाँ एटा ये ना एटा मास ऑफ सॉल्यूशन दिया ना, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ना, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम. हमारा मास परसेंट दिया पूरा. सो आमको मास परसेंट देसी ताने मास ऑफ सॉल्यूट है x ग्राम, आमको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट धरा जो m1 ग्राम. तो मास ऑफ सॉल्यूशन आमको दिया 100 ग्राम, डेंसिटी आमको दिया d ग्राम पर ml. यस, तो आमको रिक्वायर्ड कौन दरकार था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पाइले मु फार्मूला बार करी, बार केमती करी देखो. तो कैन आई राइट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन लगी मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, पूरा परिष्कार. तो आमको मास परसेंटेज देसी तर मास ऑफ सॉल्यूट दिया s ग्राम, मास ऑफ हमको सॉल्यूशन दे देला 100 ग्राम, आमको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया m1 ग्राम. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आम कैलकुलेट करि परिबा मास ऑफ सॉल्यूशन ता माने 100 होची ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी आसिला d ग्राम पर ml. सो हमको फाइनल मिला 100/d ml, ग्राम ग्राम कैंसिल हियर 100/d ml. तले आस नॉर्मल एक्सप्रेशन को तले मोलारिटी कोड हम कौन लिखि परिबा छुआ W1/m1 इंटू 1000 कैन ml अच्छी. सो 100/d, 100/d. ये सुन न. सो देखो तुम कौन आसीगला W1/m1 W1 बाई कौन आसीगला छुआ m1 W1 जार वैल्यू गोटे पुट कर दियो x है x पुट कर दियो x/m1 इंटू देखो कौन आसला छुआ तो d इंटू 10. देखो ये d ऊपर को उठिला ये काटिदेला तो d इंटू के गला 10. ताले देखो तो जदि तुमको मोलारिटी कैलकुलेट करबार अच्छी तो x तुम किए थिला मास परसेंटेज रे वैल्यू डिवाइड कर दियो कौन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू d इंटू 10. You will get the value of molarity. देखो मैं तुमको गोटे सिंपल कथा कहूँ केमती देख है कि लेट मास परसेंटेज ऑफ H2SO for solution इस मन कर दिया 49 वैल्यू दी मत 49 एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.34 ग्राम पर ml, 1.34 ग्राम पर ml देसी. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलारिटी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलारिटी. ताले मोर कौन आसबो छुआ देखो मते x वैल्यू केते देछि छुआ देखो 49 सीधा पुट कली इंटू डेंसिटी वैल्यू केते आइछि 1.34 10 तो थिला बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट केते अछि 98 90 केते आसीबो 8. ताले मोर आंसर केते आसीबो देखो पिला माने ये आसी गला अछि 2 ये हे गला तुमर 13.4/2
तो आंसर केते जो पिला माने 6 पॉइंट हला कि 6 पॉइंट केते गेला 7 तो दैट इज मोल पर लीटर यूनिट पिला में बुझेला तो देखो मास परसेंटेज तुम देतिला 49 जोटा तुम पई x डेंसिटी तुम पई देतिला एटा तुम पई d एवं सॉल्यूट रो तुम कैलकुलेट कर परिबो मोलर मास तो आमर फार्मूला कौन थिला x इंटू d इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ताले 49 इंटू 1.34 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 98 so by calculating you will get the value 6.7 mol per liter